बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर कंप्यूटर साइंस पेपर हेल्ड थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके जी, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज इलेक्ट्रिकल पावर वाज डेवलप्ड बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन विंसेंट एटर्नसॉफ, ऑप्शन सी। ठीक है जी, आते हैं ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, PDP5, PD8, IBM 360 series and IBM 370 series belong to which generation? तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड जनरेशन। ये थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है। ठीक है जी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड, द फंक्शन ऑफ एन OP कोड इज विच? टू इंसर्ट द CPU, टू ट्रांसलेट a mnemonic, टू ऑपरेट द इनपुट आउटपुट डिवाइस, टू एक्ट एज ए बफर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू इंसर्ट द CPU, ऑप्शन ए। ठीक है जी, सॉरी, ऑप्शन ए। ओके। क्वेश्चन 4, register that collect the results of computations are general purpose, main storage, storage register और accumulator। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है accumulator, ऑप्शन डी। ठीक है जी, accumulator। Question number 5, laser beam technology is used for terminal, optical disc, keyboard, magnetic tape. The correct answer is optical disc. Laser beam technology is used for optical disc. ठीक है जी, B is the right option. Question 6, in order to accommodate the multiple operating system, DOS allows creating multiple partition with the program which the correct answer is C, fdisk. Question 6 का करेक्ट आंसर है fdisk, C। ठीक है जी। Question number 8, in operating system paging, what is needed to keep track of the various page? The correct answer is page table, option B। ठीक है जी, ऑप्शन बी, page table। Question 9, multi-programming is considered to be instruction, procedure, program, event. Multi-programming is considered to be event driven, option D is the correct answer, option D। ठीक है जी। In multi-programming, a condition that temporarily suspends program execution is OS, interrupt, IVT and none of these। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है इंटरप्ट, आंसर ऑप्शन बी। ठीक है जी, इंटरप्ट। ओके जी। 11, a relatively small amount of past memory used for storing recently used or frequently instruction is called cache, flash memory, register or RAM। The correct answer of question 11 is cache, option A। ठीक है जी, cache। Question 12, the measure of speed that measures the ability of a computer to perform complex mathematical operation is megahertz, megabits, megabyte and megaflop। The correct option is megabyte, option C। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है C, megabyte। Question 13, what is the combination of L-time and E-time called? Instruction cycle, machine cycle, execution cycle। ठीक है जी, इसकी कॉम्बिनेशन सी क्या बनता है क्वेश्चन 13 में? अ मशीन साइकिल। द करेक्ट आंसर इज सी,
ओके जी। क्वेश्चन 14, what is the term for software that can be used to build an expert system? The correct answer is option A, artificial intelligence. ऑप्शन ए, ठीक है जी। 15, is a device that regenerates or amplifies the weak signal. रिपीटर्स, रिपीटर्स क्या करते हैं? वीक सिग्नल्स को रिजेनरेट करते हैं। ऑप्शन ए, ओके जी। क्वेश्चन 16, हाउ मेनी बिट्स रिप्रेजेंट आईपी एड्रेस इन टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल? क्वेश्चन 16, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 32 बिट, ऑप्शन सी, ठीक है जी, 32 बिट। Question 17, DSL is a digital subscriber line modem technology that transforms ordinary lines into high-speed digital lines for fast communication, internet access, LAN speed and DSL access। तो ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन, ठीक है जी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, how many pairs of computers can simultaneously communicate on Ethernet LAN? Question 18 का करेक्ट ऑप्शन है ए, 1, ठीक है जी। How many pairs of computer? One pair of computer can simultaneously communicate on Ethernet LAN. Question 19, the process of converting from analog to digital is called modulation, line switching, telecommuting, demodulation. The correct answer is modulation, option A, modulation, ठीक है जी। 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है, which of the following does Riot provide a graphical user interface? OS2, MS-DOS, Macintosh, Windows NT Workstation. The correct answer is option A, OS2, ठीक है जी। Question 21, the type of modulation that changes the height of the signal is called amplitude. The correct option is C, option C, ठीक है जी। Okay, let's to select this. Option C is the correct answer. The baud rate is always equal to the bit rate, is equal to twice the bandwidth of an ideal channel, is not equal to the signaling rate, and option D। तो क्वेश्चन 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, the baud rate is equal to twice the bandwidth of an ideal channel, ऑप्शन बी, ठीक है जी, क्या ऑप्शन बी। 23, which control signal can a serial cable indicate that the data set is ready? RTS, DTR, DSR, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर है DTR, डेटा टर्मिनल रेडी, ठीक है जी, DTR, DTR इज द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम केबल लेंथ 4 meters, 50 feet, 8 meters, 25 feet, ठीक जी। तो अकॉर्डिंग टू गूगल इट इज 100 मीटर इक्वल टू 328 फीट, ठीक है जी। लेकिन इसमें ये ऑप्शन है नहीं, ये शायद उन्होंने ट्रेडिशनल लिए है, तो ट्रेडिशनल मैक्सिमम केबल लेंथ जो था वो 50 था, ठीक है जी, 50, ऑप्शन बी। The IEEE 802.3 10 best standard specifies which cable type, ठीक है, Tenet coax, Technet coax, UTP, Cat pipe, all of these। तो ऑप्शन बी जो है Technet coaxial cable ई करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। 26, which of the following devices perform protocol conversion? Bridge, router, gateway। 26
में जो है राइट ऑप्शन है गेटवे। ठीक है। अच्छा जी 27 which layer provide interface between AAL and physical layer। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ATM लेयर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 द IP एड्रेस 151.154.0.4 belongs to which one class। ठीक है जी। तो ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, काइंडली आप कंफर्म कर लें। Which of the following is not part of packet? Which of the following is not part of packet? 29 में जो है करेक्ट ऑप्शन है फेरिटी बी। ठीक है जी फेरिटी। 30 Which of the following material is used in manufacturing fiber optics? Ultra pure glass, glass coated with plastic, all of these। The correct answer is all of these। ऑप्शन डी। ठीक है जी। Question 31 What type of language is used to access database? Query language, structure language, records, MS Access। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, लेकिन इसमें जो है पूरा दिया नहीं है, सिर्फ क्वेरी लैंग्वेज गिवन है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है जी। Question 32 When planning a database, the first step is to determine the rows and columns that together form the data structure, graphs, file structure, tables। The correct answer is tables। ठीक है जी ऑप्शन डी। Who and when introduced the ER model, entity relationship model? The correct answer is option A। ठीक है जी 1976। The wrapping of a data and functions into a single unit called class is known as encapsulation, class constructor, inheritance, and encapsulation। The correct answer is encapsulation। ऑप्शन ए। ठीक है जी